Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे साइंटिफिक फैक्ट्स रो इंपोर्टेंट MCQs रही प्रैक्टिस करबा सिलेबस अनुसार प्रश्न रहिबो फॉर योर एग्जामिनेशन SSB जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क. आपण एही PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिबे. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 1. Which Indian scientist won the Nobel Prize in Physics in 1930 रे 1930 मसिया रे फिजिक्स रे अर्थात पदार्थ विज्ञान क्षेत्र रे नोबेल पुरस्कार प्रदान करा जायतिला केउ भारतीय वैज्ञानिक को. व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर? 1930 मसिया रे सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार रे सम्मानित करा जायतिला. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ठीक अछि. से रमन इफेक्ट आलोकर जो विकिरण रो जो प्रक्रिया को से दर्शाइथिले. ओके, रमन इफेक्ट को से दर्शाइबा जो तांको नोबेल पुरस्कार रे सम्मानित करा जायतिला फिजिक्स क्षेत्र रे 1930 मसिया रे. ओके, होमी जहांगीर भाभा ऑप्शन ए देखो. होमी जहांगीर भाभा से होचंती जो भारतर परमाणु कार्यक्रम रो जनक. ओके, विक्रम साराभाई महाकाश कार्यक्रम रो जनक. एपीजे अब्दुल कलाम को केउ नाम रे जाना जानती? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम रे जाना जानती. नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम? ट्राई करबा. ब्लड ग्रुप सिस्टम को के डिस्कवर करथिले? कार्ल लैंडस्टीनर. ऑप्शन बी होइछ राइट आंसर. कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप जहां आपनकर ABO रक्तर वर्ग एही सिस्टम को से डेवलप करिथिले बा डिस्कवर करिथिले. ओके, एडवर्ड जेनर कोन डिस्कवर करथिले कहंतु? स्मॉल पॉक्स रो जो वैक्सीन को से डिस्कवर करिथिले. सेमिति ऑप्शन सी रे रहिछि लुइस पास्चर कोन डिस्कवर करथिले? लुइस पास्चर कोन डिस्कवर करथिले कहंतु? से गोटे टीका जहा को आपण कहि परिबे जलांतक टीका. ओके, से यहा को डिस्कवर करथिले. नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कहंतु यूनिवर्सल रेसिपिएंट कोन हिजबो? AB पॉजिटिव. ऑप्शन ए होइजबो राइट आंसर. AB पॉजिटिव होची यूनिवर्सल रेसिपिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. Which blood group is known as universal donor? Universal donor हिजबो O नेगेटिव. यूनिवर्सल डोनर रो कथा आसीबो O नेगेटिव. यूनिवर्सल रेसिपिएंट माने जे ग्रहण करि परिबो एवं केउ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर ही परिबो. O नेगेटिव डोनर, AB पॉजिटिव होची रेसिपिएंट. ओके, नेक्स्ट. द केमिकल सिंबल ऑफ टंगस्टन इज कोंतु? टंगस्टन रो केमिकल सिंबल कोन हिजबो? टंगस्टन रो केमिकल सिंबल कोन हिजबो? टंगस्टन TGTUWT. W इज योर राइट आंसर. ओके, माने यार जो गोटे नेम टा रहउची दिस इज आपनकर वोल्फ्राम मन रखंतु. दिस इज टंगस्टन होची यार केमिकल सिंबल ऑफ टंगस्टन होची W. ओके, रासायनिक संकेत. नेक्स्ट, व्हिच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर रे केउ गैस को व्यवहार करा जाय निया लिभाइबा पई बा निया लिभाइबा रे सहाय्य करिबा पई केउ गैस को व्यवहार करा जाय? कार्बन डाइऑक्साइड को व्यवहार करा जाय. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. मन रखंतु फायर एक्सटिंग्विशर रे कार्बन डाइऑक्साइड को व्यवहार करा जाय. नेक्स्ट, व्हिच गैस इज नोन एज लफिंग गैस? लफिंग गैस काहू कहबा? लफिंग गैस काहू कहबा? व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर? नाइट्रोस ऑक्साइड को लफिंग गैस कहा जाय. N2O. नाइट्रोस ऑक्साइड को कौन कहा जाय? लफिंग गैस कहा जाय. N2O. ओके, N2O मन रखंतु. नेक्स्ट, द ओजोन लेयर मेनली एब्जॉर्ब्स कौन से एब्जॉर्ब करे ओजोन लेयर? यूवी रे को. दैट मींस अल्ट्रावायोलेट रेक्स को ओजोन लेयर कौन करिवो? एब्जॉर्ब करिवो. ओजोन लेयर माने ओजोन स्तर सूर्यंक ठारू आसुथुबा दिस इज वेरी हार्मफुल जाको क्षतिकारक कहा जाय. अति बाइगणी रश्मिटा यूवी रेटा. ओके, याकू कौन करिवो? से शोषित करिवो सो दैट पृथ्वीटा आपनकर कौन रहइबो ना सेफ रहइबो, सुरक्षित रहइबो. ओके, नेक्स्ट जिबा. The speed of light was fast
measured accurately by कुंतु क्यों वैज्ञानिक स्पीड ऑफ लाइट को प्रथम मेजर करथिले एक्यूरेटली व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर मन रखंतु अल्बर्ट माइकलसन ऑप्शन ए अल्बर्ट माइकलसन कोन करथिले प्रथमे आलोकर जो वेग को अति सठिक भाव से मापिथिले एवं सेथिपई ताकू नोबेल पुरस्कार मध्ये प्रदान करा दैतिला अल्बर्ट माइकलसन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोमीटर को कोथि पय व्यवहार करा जाय इलेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोमीटर मिल्क रो प्यूरिटी को आपण चेक करिवे सो प्यूरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करबा पई इलेक्ट्रोमीटर को व्यवहार करा जाय इलेक्ट्रोमीटर क्षीर रो सांद्रता मापा जाए एवं एहार जो प्यूरिटी माने कोन विशुद्धता को आपण निरूपण करि परिबे ठीक अछि दिस इज इलेक्ट्रोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 10 एन एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एनीमोमीटर को कोथि पय व्यवहार करा जाय विंड रो स्पीड वायु रो वेग मापिबा पय विंड रो स्पीड को आपण मापि परिबे एनीमोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स earthquake को क्यों इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जाए दिस इज सिस्मोग्राफ ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ इज योर राइट आंसर सिस्मोग्राफ द्वारा भूमिकंपर तीव्रता एंड एहार इंटेंसिटी टा जोटा आपनकर ठीक अछि दिस इज मापा जाए बा रिकॉर्ड करा जाए नेक्स्ट हाइग्रोमीटर मेजर्स हाइग्रोमीटर रे कोन मेजर करा जाए हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर वायुमंडल रे थिबा आर्द्रता मींस ह्यूमिडिटी को मापिबा पई व्यवहार करा जाए ह्यूमिडिटी हबो राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुंतु एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापिबा पई बारोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय चाप को मापिबा पई बारोमीटर को व्यवहार करा जाए बारोमीटर इज राइट आंसर नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होची एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एसआई को कोन न्यूटन ओके नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोन हबो कोंतु इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट एम्पियर ऑप्शन सी एम्पियर इज द राइट आंसर नेक्स्ट ओम्स लॉ वाज प्रपोज्ड बाय ओम्स लॉ को किए प्रदान करथिले ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम एही नियमटी प्रदान करिथिले दिस ओम्स लॉ ओके v होची आईआर ठीक अछि v होची आईआर दिस इज द फार्मूला ओम्स लॉ से प्रदान करिथिले नेक्स्ट कोंतु चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ल्स लॉ कोन कहूची चार्ल्स को नियम अनुसार वॉल्यूम ऑफ द गैस रो जो वॉल्यूम माने आयतन यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा सहित गैस रो आयतनटा तार तापमात्रा सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो मींस ऑप्शन बी टेंपरेचर इज द राइट आंसर ओके मींस v होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t e समानुपाती t नेक्स्ट बॉयल्स लॉ रिलेट्स द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ बॉयल्स लॉ कोन कहूची प्रेशर एवं वॉल्यूम ठीक अछि बॉयल कर नियम अनुसार प्रेशर माने चाप एंड वॉल्यूम ठीक अछि दिस इज कोन हे जो एटा आपन कहा सहित रिलेटेड अटंती प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हे जो एटा गैस हो ना गैस इज राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर गैसेस ऑप्शन सी को चूज करंतु नेक्स्ट एवोगाड्रोस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय कोंतु एवोगाड्रो लॉ को के प्रपोज करथिले एवोगाड्रो ही एटा को प्रस्तावित करथिले सो आमिडियो एवोगाड्रो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर आमिडियो एवोगाड्रो ही एवोगाड्रो ठीक अछि से एही नियमटी दैथिले नेक्स्ट बा हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल Who is known as the father of periodic table? Which option is your right answer? Father of periodic table किए कहंतु
Dimitri Mendeleev. Dimitri Mendeleev. D Mendeleev मन रखंतु. Known as the father of periodic table, means periodic table रो जनक भाବରେ जणा जानती. Next, the Mangalyaan Mars orbit mission was launched by ISRO in केउ मसिया रे मंगलयान को लॉन्च करा देथिला 2013 मसिया रे. ISRO द्वारा 2013 मसिया रे मंगल यान को लॉन्च करा देथिला. Next question, Aditya L1 mission is related to study of sun. Aditya L1 होची related to study of sun. Okay, sun रो जो atmosphere and sun विषय गोटे सौर मिशन थिला. sun is the right answer. Next कहंतु चंद्रयान 3 successfully landed on moon on then प्रश्न आछि 2023 मसिया रे चंद्रयान 3 successfully land करथिला मून रे. ऑप्शन सी होइज बा राइट आंसर. द चंद्रयान 1 मिशन वाज लॉन्च्ड इन चंद्रयान 1 मिशन को 2008 मसिया रे लॉन्च करा दिथिला. द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस वाज प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला. कल्पना चावला थिले प्रथम महिला जे कि स्पेस को यात्रा करिथिले महाकाश को. राकेश शर्मा ट्रैवल टू स्पेस इन राकेश शर्मा 1984 मसिया रे स्पेस यात्रा करथिले 1984. अपोलो 11 लैंडेड ऑन मून ऑन अपोलो 11 1970 और 1969 रे अपोलो 11 मून रे लैंड करथिला. द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून वाज जे कि वॉक करथिले मून रे से होजंदी नील आर्मस्ट्रांग. नील आर्मस्ट्रांग इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, सत्येंद्रनाथ बोस इज एसोसिएटेड विथ सत्येंद्रनाथ बोस से कोन बोस आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स सहित जड़ित अटंती. ओके, नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बोस इज फेमस फॉर हिज पियोनियरिंग वर्क इन जगदीश चंद्र बोस ठीक अछि रेडियो वेव्स माने जो बेतार तरंग पाई. ओके, एंड बेतार तरंग या सहित प्लांट साइकोलॉजी या सहित मीन्स रेडियो एंड प्लांट साइकोलॉजी सहित जड़ित थिले. नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 32. होमी जहांगीर भाभा इज रिगार्डेड एज द होमी जहांगीर भाभा होचंदी फादर ऑफ इंडियास न्यूक्लियर प्रोग्राम. ऑप्शन ए फादर ऑफ इंडियास न्यूक्लियर प्रोग्राम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, सेमिति कोंतु हर्गिस कुरेइन is known as the father of white revolution. Father of white revolution मन रखंतु. ऑप्शन बी होई जो हेरो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिबा. विक्रम साराभाई इज रिगार्डेड एज कोन इज कोंतु. विक्रम साराभाई होचंदी फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम. फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम. नेक्स्ट, which Indian scientist is known as the missile man of India? Missile man of India होचंदी APJ अब्दुल कलाम. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. इंडियास फर्स्ट सैटेलाइट वाज भारतर प्रथम सैटेलाइट कोन थिला. आर्यभट्ट थिला. आर्यभट्ट इज योर राइट आंसर. आर्यभट्ट 1975 रे को लॉन्च करा दिथिला. नेक्स्ट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस वाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थिला कोन सेटा. प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट थिला स्पुटनिक 1. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ट्राई करंतु. क्वेश्चन नंबर 38. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किए एक्सप्लेन करथिले. अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को से याकू व्याख्या करथिले मींस एक्सप्लेन करथिले. ओके, एवं सेथि पई ताकू नोबेल पुरस्कार मध्ये प्रदान करा जायतिला. नेक्स्ट कोंतु क्वांटम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय. याकू के प्रस्तावित करथिले. क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक मन रखि दंतु क्वांटम थ्योरी. राइट. नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर कांसेप्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हेनरी मोस्ले. एटॉमिक नंबर रो कांसेप्ट को से एस्टैब्लिश करथिले. नेक्स्ट, द पीरियोडिक लॉ इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इज बेस्ड ऑन. पीरियोडिक लॉ टा आपनकर एटॉमिक नंबर को नेकिना
एटॉमिक नंबर को नेकी हे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ये चार्ल्स डार्विन ऑप्शन बी हो इज राइट आंसर चार्ल्स डार्विन जो नेचुरल साइंस सिलेक्शन को नेकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विवर्तन जो नियम को से प्रदान करथिले नेक्स्ट द टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड बाय कोंतु पंक पंक मन रखंतु पंक और फंक ठीक अछि ऑप्शन ए काश्मीर फंक कोन करथिले इ जो गोटे विटामिन शब्दटीर से नामकरण करथिले नेक्स्ट नेक्स्ट होची विटामिन सी वाज डिस्कवर्ड बाय विटामिन सी को के डिस्कवर करथिले अल्बर्ट सेंट देन जॉर्गी ओके जॉर्गी ऑप्शन ए होइज राइट आंसर विटामिन सी को से डिस्कवर करथिले द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इज मेनली क्रेडिटेड टू इंसुलिन को के डिस्कवर करथिले इंसुलिन व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इज मेनली क्रेडिटेड टू जदि हम ऑप्शंस अनुसार देखिबा ताहाले ट्राई करंतु एटा टिके आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइबे कि ऑप्शन ए हबो कि फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट हबो ऑप्शन ए तो ठीक लागुची आपण टिके एटा कमेंट सेक्शन रे कंफर्म करिवे नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को के डेवलप करथिले आल्के जेफ्रिस याको डिस्कवर करिथिले ऑप्शन ए होइज राइट आंसर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय कोंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को के इन्वेंट करथिले रुस्का मने रखि दियंतु ओके अर्नेस्ट रुस्का मने रखंतु नेक्स्ट कॉलेरा बैक्टीरियम वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलेरा बैक्टीरियम को रॉबर्ट कोच याको डिस्कवर करिथिले The tuberculosis bacterium was discovered by tuberculosis को also Robert Koch is your right answer. Next, who discovered the malaria parasite in human blood रे malaria parasite human blood रे याको के डिस्कवर करथिले अल्फोंस लावरान याको डिस्कवर करथिले ऑप्शन बी नेक्स्ट the first successful vaccine for rabies was developed by Louis Pasteur. Louis Pasteur is your right answer. Option B is your right answer. The diesel engine was invented by कौन तो diesel engine को क्या invent करथिले diesel engine Rudolf diesel is your right answer. Option A. The first successful airplane was invented by Wright brothers airplanes. Next, who invented the World Wide Web WWW in 1989 रे Tim Berners-Lee option C is your right answer. The transistor was invented in 1947 by transistor को किए invent करथिले जॉन मन रखंतु जॉन बार्डेन ओके एंड ऑप्शन अनुसार देखिबा बार्डेन देन आपनकर Pratten and Shockley ठीक अछि 1947 रे ट्रांजिस्टर को डिस्कवर करा दैतला एमानक द्वारा नेक्स्ट हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन को डिस्कवर करथिले नेक्स्ट ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले मन रखि दियंत ऑक्सीजन नेक्स्ट रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियम मैडम जो मैरी क्यूरी सो मैरी एवं पियरी क्यूरी ऑप्शन बी व्हिच वाज राइट आंसर नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्रेल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करथिले एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय एक्सरे कोंतु
रंटेनजेन ठीक अछि विलियम कर्नाड रंटेनजेन ए नाटी मन रखि दियंतु ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द फर्स्ट practical steam engine was developed by steam engine first practical steam engine रो कथा को जाउछ जेम्स वाट steam engine को तो डेवलप करथिले किंतु फास्ट जदि practical steam engine रो कथा आसी जिवो देन न्यूकोमैन थॉमस न्यूकोमैन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय कोंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किए डिस्कवर करथिले याकू माइकल फैराडे डिस्कवर करथिले ऑप्शन ए हो इज राइट आंसर नेक्स्ट रेडियो कम्युनिकेशन वाज इन्वेंटेड बाय रेडियो कम्युनिकेशन को मार्कोनी ठीक अछि गुगली गुगली एलोमो मार्कोनी हो इज राइट आंसर नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन विलियम विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करथिले नेक्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इज योर राइट आंसर बट जदि प्रश्न आसीबो द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ठीक अछि 1665 ना 66 बोथे एटा नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स भाबरे के जणा जानती फादर ऑफ जेनेटिक्स होजंती जॉर्ज मेंडल ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट DNA double helix structure was proposed in 1953 by कोंतु DNA रो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को प्रस्तावित करा दितला 1953 मसिया रे कहा द्वारा जेम्स वाटसन ओके एंड के थिले जने क्रिक थिले वाटसन एंड क्रिक ऑप्शन ए हो इज राइट आंसर द पोलियो वैक्सीन IPV was developed by पोलियो वैक्सीन साल्क जोनास साल्क याकू डिस्कवर करथिले और डेवलप करथिले हु डेवलप्ड द फर्स्ट सक्सेसफुली वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स रे एडवर्ड जेनर ए नामटी को मन रखंतु नेक्स्ट पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करथिले 1928 मसिया रे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो कथा आसबो मींस सर आइजैक न्यूटन रो कथा कहबा नेक्स्ट प्रोटॉन को के डिस्कवर करथिले प्रोटॉन को रदरफोर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड इज योर राइट आंसर हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस थ्रू द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रे आल्सो रदरफोर्ड ये रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन को के डिस्कवर करथिले कोंतु न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक या को डिस्कवर करथिले इलेक्ट्रॉन को के डिस्कवर करथिले 1897 रे इलेक्ट्रॉन को जेजे थॉमसन नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी रो एसआई यूनिट कोन हिजबो कोंतु एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी रो बेक्रेल मन रखंतु एसआई यूनिट नेक्स्ट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्राइमरीली ऑब्जर्व्स एथरे कोन माने कोन एथरे पर्यवेक्षण करा जाय पारे इंफ्रारेड रो जो रेडिएशन को ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट गगनयान थिला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर इंडिया's फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज अप्सरा होची फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अर्नेस्ट रुस्को या को डिस्कवर करिथिले नेक्स्ट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टा एटॉमिक नंबर को बेस करी आपनकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नेक्स्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय के प्रस्तावित करथिले एंटोनी लाभोजर माने रखंतु which scientist proposed the uncertainty principle हाइजेनबर्ग ठीक अछि वार्नर हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रही ना ओके अनिश्चिततार जो नियम नेक्स्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द डैश नेचर ऑफ लाइट माने कोन एथरे आपन जो कोन को गला प्रमाणित गला डैश नेचर ऑफ लाइट
मैग्नेटिक हबनी वेव हबनी पार्टिकल जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री होचंती एंटोनियो लाभोजर नेक्स्ट which gas is evolved when zinc react with dilute hydrochloric acid hydrogen is your right answer okay zinc means Jarden plus आपनकर HCl react करिवे then Jarden Cl2 is plus hydrogen H2 next which gas turn lime water milky this is carbon dioxide CO2 carbon dioxide next quick lime is chemically known as quick lime को calcium oxide कहा जाए CaO calcium oxide is your right answer next कहंतु slaked lime is slaked lime रो कोन हिजो रासायनिक संकेत CaOH रो all twice next plaster of paris is chemically plaster of paris को calcium sulfate hemihydrate option B हो इज राइट आंसर दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस यार संकेतटा कोन हो अपन कमेंट सेक्शन रे कहि परिबे कि CaSO4 H2O then half H2O CaSO4 half H2O मन रखन तो परीक्षा राशि पारे नेक्स्ट वाशिंग सोडा को केमिकली कोन कहा जाय वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 then 10H2O next बेकिंग सोडा को केमिकली कोन कहबा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 नेक्स्ट कोन तो साधारण लूण कॉमन सॉल्ट इज यार रासायनिक नाम कोन जो कॉमन सॉल्ट इज केमिकली सोडियम क्लोराइड NaCl नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर इज मेनली यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पाउडर को प्यूरिफिकेशन पाई वाटर प्यूरिफिकेशन पाई ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करंती ओके ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर रे आपनकर एसिटिक एसिड थाए एसिटिक एसिड CH3COOH नेक्स्ट होजी ट्राई करंतु टार्टारिक एसिड इज मेनली फाउंड इन अंगूर मीन्स ग्रेप्स रो आपण पाइबा एही एसिड टार्टारिक एसिड नेक्स्ट व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन कॉड दही रे आपनकर केउ एसिड थाए लैक्टिक एसिड इज योर राइट आंसर व्हिच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन रे ब्लू लिटमस बहुत इजी क्वेश्चन नेक्स्ट साइट्रिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन साइट्रिक एसिड लेमन रे रहबो लेंबू कमला परी जो खट्टा फल रे आपण कोन पाइबे साइट्रिक एसिड पाइबे आउट ऑफ 100 आपण केतोटी प्रश्न सठिक भाव में करि परिछंती कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे आपण ई पीडीएफ नोट आल्सो डाउनलोड करि परिबे वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अवेलेबल रहिछि एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु ओके सिलेबस अनुसार एथु आपनकर 6 रु माने पाखा पाखी 6 मार्क रो प्रश्न आसी पारे दैट्स व्हाई भलो भाबरे प्रैक्टिस करंतु साइंटिफिक फैक्ट को नै कि क्लास टी को लाइक करंतु एवं बहु मात्रा रे शेयर करंतु यू आर इंटरेस्टेड देन ई चैनल रो जॉइन बटन रे जॉइन करी आपण सपोर्ट करि परिबे आई होप ए क्लास टी आपण मानक बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास